हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर 9 एंड द चैप्टर नेम इज एडजेक्टिव्स। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, लेट्स मूव इनटू द स्टार्टर पॉइंट। लुक एट दिस पोस्टर, अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव्स इन इट। आपको पोस्टर को ध्यान से देखना है और अंडरलाइन करना है जो भी एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कंफर्टेबल शूज, शूज कैसे कंफर्टेबल है तो कंफर्टेबल आपका एडजेक्टिव हो गया, अंडरलाइन करना है। कलरफुल टॉयज, कलरफुल पे अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग बुक्स, इंटरेस्टिंग पे आपको अंडरलाइन करना है। ब्यूटीफुल डॉल्स, ब्यूटीफुल पे अंडरलाइन करना है। बिग बैग्स, बिग पे आपको अंडरलाइन करना है। तो ये आपके क्या हो गए, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि एडजेक्टिव्स हो गए। ओके, so part A is given adjectives describing words. Read the following sentences. First one, Rahul is a tall boy. The word tall tells us what kind of boy Rahul is, ठीक है। Next one is second, students ये second point है, ये 3 नहीं है। It is a red apple. The word red tells us what the color of the apple is. It describes the apple. ये apple को describe कर रहा है, red color. Next is point number 3. Students ये point number 3 है, not second. Gaurika has 2 dolls. The word 2 tells us how many dolls Gaurika has. 2. Okay. So in the above sentences, tall, red and 2 are describing words. Describing words are called adjectives. In the above sentences, they are placed before the noun. Noun से पहले लगे हैं ये. They describe, ये क्या नाम, ये noun को describe कर रहे हैं. Okay. Now the next thing is that words that add meaning to the noun or pronoun are called adjective. जो meaning add on कर देते हैं noun और pronoun के साथ, उनको हम adjective बोलते हैं. Adjectives are also called describing words. For example, fat, thin, black, 5, etc. Okay, now read the following sentences. First one, Anju is fat. Next one, the rose is red. Next one, the house is new. In the above sentences, fat, red and new are describing words, and they describe Anju, the rose and the house. So therefore they are called adjectives. इनको हम adjective बोलते हैं, but they are placed after the noun they describe. ये noun के बाद लगते हैं जिसको describe कर रहे हैं. Okay, now before moving further, here is a point. Did you know adjectives add meaning to the noun or pronoun? Adjective meaning add करते हैं noun और pronoun के साथ. Okay, now let's move into the self evaluation point, part B. Add suitable noun to the following adjective. ये जो following adjective दे रखे हैं इनके साथ हमें suitable noun को add करना है. जैसे कि first one, a new car, ठीक है, a fat boy. Okay, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, इन sentences को पूरा करना है by writing down the suitable noun. Okay. Now next one is part C. Circle the adjective in the following sentences. First one, Priya is a naughty girl. अब कैसी लड़की है वो, naughty है, तो naughty पे आपको circle करना है. तो आपको sentence को ध्यान से पढ़ना और circle करना है सिर्फ adjective को. Now next is part D, kinds of adjectives. We know that adjectives are words that describe a noun, जो noun को describe करते हैं. Let us learn about the different kinds of adjectives and how they are formed. अब हम कुछ kinds of adjectives के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो form होते हैं. So here you can see adjectives are of different kinds. Adjectives के 5 kind यहाँ पर दिखा रखे हैं. First one, adjectives of quality, then second one, adjectives of number, then adjectives of quantity, then demonstrative adjectives and then possessive adjectives. तो हम एक एक करके हर एक उसमें फॉर्म में जाएंगे. पार्ट ई है आपका adjectives of quality. Adjectives which answer the question of what kind are called adjective of quality. मतलब जो quality बताता है किसी noun के बारे में, pronoun के बारे में, तो हम adjective of quality बोलते हैं. For example, Ashok was a great king. तो कैसा राजा है वो, great king है, तो ये आपका adjective of quality हो गया. Next one, it was a cloudy day. ठीक है, कैसा दिन था, cloudy day था. Okay, now next is part F. Underline the adjectives of quality in these sentences. इसमें आपको adjective of quality को underline करना है. First one, the rose is a beautiful flower. तो कैसा flower है वो, beautiful है, तो उसको आप underline करोगे. तो ऐसे sentence को ध्यान से पढ़ना, underline करना सिर्फ adjective of quality को. Okay. Now the next thing is part G, adjective of number. Adjectives which answer the question of how many are called adjectives of number. इसको हम adjective of number बोलते हैं. Some examples of adjectives of number are 1, 3, 4, 6, all, some, enough, few, a few and any. Okay, examples. Some men are rich. He had 5 balloons. He got 20 marks. Several people come there. तो आप देख सकते हैं कैसे number form में ये यहाँ पर use कर रखा है sentences में. Now next is part H, adjectives of quantity. Adjectives which answer the question of how much are called adjective of quantity. इसे हम adjective of quantity बोलते हैं. They do not give us an exact number of the noun. ये exact number नहीं देता है. Some examples of adjective of quantity are most, all, little, a little, any, enough, some, whole, half as much, less and least. Okay, ये आपके adjectives of quantity हो गए. इसके examples आपको दे रखे हैं, जैसे कि first one, he had much money. He had a little font with hers. Next one, she had sufficient milk.
Okay, now before moving further, there is a point. Did you know adjectives of quantity are used with uncountable noun? Quantity को हम uncountable noun के साथ use करते हैं. Some words can be used both as adjective of number and adjective of quantity. दोनों के form में use हो सकते हैं. For example, some, enough. Okay, if the adjective is followed by a countable noun, अगर adjective के पीछे countable noun लगा है, it is an adjective of number. तो वो adjective of number कहलाया जाता है, not quantity. It is followed by an uncountable noun, और ये followed होता है uncountable noun के साथ. It is an adjective of quantity. Okay, next one is part I. Circle the adjective of quantity in the passage. Okay, तो इस passage को आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें adjective of quantity को आपको circle करना है. Okay, now next one is part J. Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are this, that, these and those. We use this and that with singular noun. We use these and those with plural noun. This and that singular noun के साथ, these and those plural noun के साथ. For example, this boy stood first in the examination. That girl saved the child life. These mangoes are sweet. Those rooms are airy. Now before moving further, there is a point. Did you know the word demonstrative means showing or pointing to something? कोई चीज दिखाना, शो करना या point out करना किसी पे. ठीक है. Now let's move into the part K. Use this, that, these or those to fill in the blank. First one, my son is starting in dash row. My son is, students यहाँ पर standing होगा, starting नहीं. My son is standing in that row. Okay. So ऐसे ही आपको इन blanks को fill करना है by using the demonstrative adjective. Okay, जो कि क्या है? This, that, these and those. Okay. Now next is part L. Possessive adjectives. Possessive adjectives my, yours, his, her, its are used if the possessive is singular. अगर possessive singular है, are, your and their are used if the possessive is plural. अगर plural है तो are, your and their use होगा. For example, the tree is losing its leaves. Next one, the husband is working with his wife. Okay. Next one is the husband is working with his wife. Now before moving further, there is a point. Did you know his is masculine, her is feminine? My, your, are, their are used for masculine or feminine. मतलब वो दोनों के लिए use होता है, masculine और feminine. It is used for neuter gender singular and there is used for neuter gender plural. Neuter gender plural के लिए there use करते हैं, singular के लिए हम it use करते हैं. Now let's move into the part M. Make sentences using the words given in the 4 columns. हमें sentences बनाने हैं by using the word which are given in the column. Okay, जैसे कि where is my bag? This are your books. Are these your books? Okay, so ऐसे ही आपको क्या करना है? sentences बनाने हैं by which are given in the column. Okay, in the box. Now next is part N. Formation of adjectives. Adjectives can be formed by adding some letters to noun and verb. Adjective हम form कर सकते हैं जब हम कुछ letters add करते हैं to noun and verbs. Okay, जैसे कि point number 1, by adding able to certain noun. कुछ noun में हम able add करके इसका adjective form कर सकते हैं, जैसे comfort plus able is comfortable. Okay, now next one, point number 2, by adding y to some nouns. किसी noun में y add करके हम उसे adjective बना सकते हैं, जैसे oil plus y is oily. Okay, now next one, point 3. By adding ish to form to some nouns. मतलब कुछ noun में ish join करके हम इसे adjective बना सकते हैं. Fool plus ish is foolish. Now next point number 4. By adding ful to some noun. तो कुछ noun में हम full add करके उन्हें adjective बना सकते हैं, जैसे cheer plus full is cheerful. Now the next is part O. Complete these sentences by writing the correct adjective form of the noun / verb in bracket. आपको इन sentences को complete करना है. आपको क्या लिखना है? Correct form of the adjective, correct form of the adjective लिखना of the noun or verb. Okay. जैसे कि June, July and August are generally dash months, are generally rainy months. Okay. तो ऐसे ही आपको हर एक sentence को ध्यान से पढ़ना. Correct form of the आपको क्या लिखना है? Noun लिखना है. Okay. तो ऐसे ही आपको हर एक ब्लैंक को ध्यान से पढ़ना है, हर एक सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है. करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव आपको यूज करना है इन ईच एंड एवरी ब्लैंक. ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द एक्टिविटी पार्ट. यूज 3 एडजेक्टिव्स इन ईच पिक्चर टू डिस्क्राइब देम. कलर द पिक्चर टू 1 इज डन फॉर यू. तो आपको क्या करना है? जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हो रेड, स्वीट, डिलीशियस. तो आपको हर एक इमेज के लिए 3 आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने ही लिखने हैं, उनको कलर भी करना है अच्छे से नीटली. ओके, I hope student that you understood this chapter. आपका homework है कि आपको इसके following exercise part को complete करना है. Now I'm going to meet you in another class, children, students. Bye bye.